Jatin ji, I always recommend everybody to have some kind of coverage, and the purpose is to educate our clients and listeners. Grandparents and parents should have life insurance, and why they should have? Very simple, three basic points. पहली चीज़ है final expenses. God forbid something happens to someone, who is going to bear the cost of final expense? Final expense का मतलब है, you are going for cremation or burial. 20 से $25,000, $20,000 to $25,000 is a normal cost. Now, if you have that saving, then it's fine, but it always helps if we have some kind of coverage for final expense. The second thing is passing on the legacy. Legacy का मतलब ये है कि if you have some kind of you want to give some kind of benefit amount to your kids or grandkids, and you said, look, you know what, I have a grandkid, I have a son or daughter, and you want to give this some gift or some amount for them, then you can insure yourself. So lakh, 2 lakh, $5 lakh, you can have that amount, and you can always pass the legacy. So the second purpose is legacy. The third one is tax consequences. If a parent is here and he has or she has assets, and that is comes in under state planning. So tax consequences क्या हो सकते हैं? अगर आपके पास में assets हैं, 1 घर है, 2 घर है, ज़मीन है, investments हैं, वो किसके पास जाएंगे? ऑफ कोर्स आपके बच्चों के पास, पर उससे पहले वो स्टेट में जाएंगे, और स्टेट प्लानिंग के बाद में जब टर्मिनल टैक्स रिटर्न फाइल होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपकी स्टेट के अंदर जो भी बेनिफिशियरी होते हैं, जो आपकी बच्चे हो सकते हैं, पर वो जब उनको बेनिफिशियरी को मिलेंगे उससे पहले टैक्स देना पड़ता है. वो टैक्स कौन देगा? सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव 10, 15, $20 million ऑफ एसेट्स. आप अपने बच्चों को आप सोचते हैं कि वो उनके हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू पे द टैक्सेस, योर स्टेट हैज टू पे द टैक्सेस. Now, your kids will say, okay, I take over 10 million worth of assets, but उससे पहले उसके ऊपर $1 million का टैक्स देना है मुझे. कहाँ से देंगे? That life insurance will kick in. It will give tax-free amount to the beneficiary, and they will pay the tax for $1 million whatever we have, and they take over the 10 million worth of state. So state planning में आपको बहुत help होती है. So the purpose is to have a proper life insurance coverage that will give you final expense, that will give you legacy planning, that will give you state planning, tax consequences. All those will be covered under this proper coverage, and you can always talk to a broker or insurance advisor. You can give us a call, we can educate you. You should be covered as a parents, you should be covered as a grandparents, because you don't know, unknowingly you might be passing on liabilities, not assets. Because those assets have some tax consequences or some debt. So please cover yourself, and that amount can be taken care by the life insurance policy. ब्यूटीफुल. तो बहन भाइयों, ये है विशाल त्रिवेदी. विशाल जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज बताएं. Definitely, it's 647-767-9852, or you can YouTube my name, Vishal Trivedi Insurance, and then you can see some of the videos we talk about here, and then we record it and we put for the people so they can get education. वंडरफुल. तो बहन vishaltrivedi.ca है वेबसाइट. फिर भी आप कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं 647-767-9852, 647-767-9852. और अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर बस्ते में रख दी है और आपने देखी भी नहीं और आपको पता भी नहीं शायद उसमें क्या कवरेज है, तो उसे एक बार रिव्यू जरूर करवा ले. रिव्यू करने के लिए भी विशाल जी आपकी हेल्प करेंगे. 647-767-9852. विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.